everyone, welcome back to my channel, and if you're new here, welcome. Please don't forget to subscribe, comment, share, and like this video. Today we're off to go camping. We're going to Camp Nissokone, which is a YMCA children's summer camp. Last year, first of all, children come from all over to this camp. Last year, unfortunately, they couldn't do it due to COVID-19. So this year, we're volunteering to go down there to set up for these children so they can have an excellent time at this camp. This camp offers so many different activities for children. They have arts and crafts, they have kayaking, canoeing, horseback riding, archery, swimming. I mean, basically you name it, they have it. It's a wonderful, wonderful program for these children to come and have a good summer. आज हम कैंपिंग जा रहे हैं, हम समर कैंप जा रहे हैं बच्चों की वॉलंटियर करने के लिए है। हम जा रहे हैं उधर पूरा सेटअप करने के लिए। ये एक YMCA रन कैंप है बच्चों के लिए, समर कैंप है जिसमें ढेर सारा एक्टिविटीज़ है बच्चों के लिए। स्विमिंग है, कनूइंग है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, कायाकिंग। मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ बिकॉज उनकी इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं। सो हम जा रहे हैं उधर सेटअप करने के लिए। लास्ट ईयर ये इन लोगों ने कोशिश की थी करने के लिए, बट ड्यू टू कोविड-19 ये कैंप नहीं हो सकी। तो इस ईयर हम सब वॉलंटियर्स उधर हेल्प करने के लिए जा रहे हैं कि हम ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी कैंप बनाएं इस समर, तो वो बच्चे एंजॉय कर सकें जिन्होंने लास्ट ईयर ऑल्सो मिस आउट किया था इस कैंप पे। Okay, आज since मैं गाड़ी नहीं चला रही हूँ, I'm not driving today, I thought I would show you guys a little bit of our freeways here. So I'm gonna go ahead, मैं आपको थोड़ा रास्ता दिखाती हूँ, थोड़ा glimpses दिखाऊंगी। ये ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगी, पर इसके थोड़े glimpses आप सबको दूंगी। First of all, मैं आप सब लोगों को मेरी favorite चीज़ दिखाऊँ, pakola. I'm sure a lot of you guys are fans of this. So pakola मैं enjoy कर रही हूँ on the drive. This is a GM plant in Flint. ये गाड़ियों का प्लांट है जहाँ पे गाड़ियाँ एक्चुअली बनती हैं। ये GM की गाड़ियाँ इधर बनती हैं। ओके, मैं थोड़ा सा आपको रास्ता भी दिखाना चाह रही हूँ। जो लोग राइट हैंड साइड पे ड्राइव यूज टू है उनको थोड़ा अजीब लगेगा बिकॉज अमेरिका में हम लेफ्ट हैंड की तरफ गाड़ी चलाते हैं। I know for some of you people who do drive on the right side, the video is going to be off a little bit because in America we drive on the left side. So here's a little bit of the freeway, guys. Hi everyone, we were just passing by Lake Huron, which is one of the 5 Great Lakes on our way to the camp, so I thought I would stop and give you guys a little tour of it. अभी हम Lake Huron में आए हैं। Lake Huron one of the 5 Great Lakes है of the world. 5 Great Lakes में जो है वो पहला है Lake Huron, फिर Lake Ontario, फिर Lake Michigan, फिर Lake Erie, and then finally Lake Superior. So ये one of the Great Lakes है, Lake Huron. Sorry, confuse कर रही हूँ आप लोगों को. So let me show you guys a little bit of that. There's a little park over here. It's called Gateway Park. That's where we're at right now, and you can completely see all of Lake Huron from here. यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा पार्क भी बना है बच्चों के लिए। यहाँ पे पार्क का नाम है गेटवे पार्क, और ये पूरा ये सारा आप जो देख रहे हो पानी, ये लेक ह्यूरॉन है। यहाँ पे पिकनिक बेंचेस भी पड़े हैं। If anybody wants to have a picnic here, there are picnic benches for people to have a picnic on. And there is the whole entire park over there with Lake Huron in the background. We are about to enter Camp Nissokone, guys. Guys, we're entering our cabin. Our cabin is coming up around the corner. It doesn't get any prettier than this. Welcome to Camp Nissokone. Okay guys, I'm here. This is my cabin behind me. We're at Camp Nissokone, and that is my cabin. This is my whole view. It's gorgeous out here. So I'm gonna go and get unpacked. Don't forget, we just checked into our cabin now.
and I thought we had a little while before we have to head out to dinner, so I thought I would come out and finish up this video by the lake. So we're all set to go head out to dinner, so I'm going to quickly wrap this up. I hope you guys enjoyed this video as much as I enjoyed making it. I hope आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो. मुझे बहुत पसंद आया बनाने में. मैं और भी ज़्यादा लगाऊंगी जब मैं घर जाऊं. So don't forget to subscribe to my channel, comment, share and like this video, and always remember, believe in yourself, love yourself and take care of yourself. Until next time, bye guys. Okay, I know I was done with that video, but I'm going to add this because we're at Cracker Barrel and I love this place. It's an old country store with a very a special feeling inside. It feels like you're in Little House on the Prairie when you come here. ये restaurant जो है, it's called Cracker Barrel. ये बहुत ही unique restaurant है. ऐसे लगता है literally कि आप Little House on the Prairie में हो या उधर पुराने ज़माने में चले गए हो कहीं. बहुत ही क्यूट डेकोरेशंस हैं इधर. आप देख भी सकते हो कि फायर प्लेस ये देखें एंटीक स्टाइल है, तो बहुत ही मज़ा आता है इधर जाने में. और थोड़ी देर में आप देखोगे कि इनके पास पुराने ज़माने का एक फ़ोन बूथ है, तो वो भी लगा हुआ है इधर. और ये जो लैंटर्न्स हैं, ये तो मुझे सफ़ा पाकिस्तान का रिमाइंड करती हैं, जो जब लाइट चली जाती थी हम ये चलाते थे. और ये सारा आप देख सकते हो कि बहुत ही एंटीक टाइप ऑफ डेकोरेशंस है इधर. For dinner, I had the fried okra, I had the trout, macaroni and cheese, as well as the biscuits with mashed potatoes and gravy. इधर मैंने खाना खाया था. ये फ्राइड भिंडी है, macaroni and cheese है, trout मछली है और mashed potatoes and gravy है. ये उनके दुकान में थोड़े knickknacks पड़े थे. These are just knickknacks that were at the store. तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करूँ. ये मुझे बहुत प्यारे लगे, इसीलिए मैंने सोचा आपको भी पसंद आएंगे. So I hope you guys like this.